मेरी कहानी रामेश्वरम में शुरू होती है, एक छोटा सा द्वीप जिसे समुद्र ने चूमा था। लहरें मुझसे कहानियां फुसफुसाती थीं। मेरे पिता जैनुलाब्दीन नाव के मालिक थे। वह एक सादा विश्वास वाले व्यक्ति थे। मेरी माँ अशियाम्मा उनकी कोमल साथी थी। हम पैसे में अमीर नहीं थे, लेकिन हम प्यार में अमीर थे। हमारा घर शांति का स्थान था। वहां कई धर्म एक साथ रहते थे। मैंने जल्दी ही सम्मान के बारे में सीखा। सभी लोगों, सभी विश्वासों के लिए सम्मान। मेरा बचपन सरल था, फिर भी पूर्ण। मैं इमली के बीज इकट्ठा करता था। मैं अपने चचेरे भाई की मदद करता था अखबार बेचने में। हर छोटे काम ने मुझे कुछ सिखाया। इसने मुझे काम का मूल्य सिखाया, ईमानदार प्रयास की गरिमा सिखाई। समुद्र मेरा पहला शिक्षक था। इसने मुझे विशालता के बारे में सिखाया। मैं पक्षियों को उड़ते हुए देखता था, नीले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए। एक गहरी इच्छा मेरे अंदर पनपने लगी, उड़ने की, खोजने की इच्छा। यह सपना मेरे दिल में जड़ें जमाने लगा। मेरे विज्ञान शिक्षक शिवा सुब्रमण्या अय्यर एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे दिखाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। वे हमें समुद्र तट पर ले गए। उन्होंने उड़ान के सिद्धांतों को समझाया। उनके शब्दों ने एक नई दुनिया खोली। उन्होंने मुझसे कहा, कलाम, उड़ने के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए। मेरी यात्रा मुझे रामेश्वरम से ले गई, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक। वहां मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उड़ान का मेरा सपना आकार ले रहा था। यह आसान रास्ता नहीं था। संसाधन कम थे, चुनौतियां कई थीं, लेकिन मेरे दिल में आग जल रही थी। मैं ऐसी मशीनें बनाना चाहता था जो उड़ सकें, मशीनें जो मेरे देश की सेवा करें। भारत युवा था, उम्मीदों से भरा हुआ। अपनी पढ़ाई के बाद मैंने DRDO में शामिल हो गया। यह 1958 की बात है, एक नए शुरुआत का समय। मैंने एक युवा वैज्ञानिक के रूप में शुरुआत की। मेरा पहला काम छोटा था, एक होवरक्राफ्ट। हमने इसे नंदी नाम दिया। यह एक सीखने का अनुभव था, परीक्षणों से भरा हुआ और कुछ छोटी सफलताओं से। मैंने यहां टीम वर्क के बारे में सीखा। हालांकि मेरा दिल रॉकेट्स के लिए तरसता था। रॉकेट्स जो आकाश को छू सकें, रॉकेट्स जो हमारे देश की रक्षा कर सकें। यह सपना एक शक्तिशाली बल था। इसने मुझे नई चुनौतियों की ओर खींचा। DRDO में मुझे एक उद्देश्य का एहसास हुआ। हम भारत की ताकत के लिए काम कर रहे थे, इसकी सुरक्षा और इसके भविष्य के लिए। हर समस्या एक अवसर थी, सीखने और बढ़ने का अवसर। एक वैज्ञानिक का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। संदेह के क्षण थे, लेकिन एक मजबूत भारत का दृष्टिकोण मुझे प्रेरित करता रहा। मेरे वरिष्ठों का समर्थन महत्वपूर्ण था। प्रोफेसर MG के मेनन जैसे लोग, उन्होंने हमें खोजने के लिए जगह दी। यह प्रोत्साहन ईंधन की तरह था। फिर आई ISRO से एक कॉल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, प्रोफेसर विक्रम साराभाई एक सच्चे दूरदर्शी। उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उनका सपना था अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना, आम आदमी के लाभ के लिए, संचार के लिए, शिक्षा के लिए। यह दृष्टि मेरे भीतर गहराई से गूंज उठी। यह कुछ बड़ा बनाने का मौका था। मेरी भूमिका थी एक परियोजना का नेतृत्व करना। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-III, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह एक विशाल कार्य था। हमारे पास सीमित संसाधन थे, सीमित अनुभव, लेकिन हमारे पास असीमित दृढ़ संकल्प था। एक युवा, उत्साही इंजीनियरों की टीम। हम दिन रात काम करते थे, एक सामान्य उद्देश्य से प्रेरित। भारत को अंतरिक्ष मानचित्र पर लाने के लिए प्रोफेसर साराभाई हमारे मार्गदर्शक थे। उन्होंने हम पर विश्वास किया, हमें सशक्त बनाया। उन्होंने हमें बड़ा सपना देखना सिखाया और असफलता से डरने की नहीं। वह कहते थे, हमें किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। उनके शब्दों ने हमें साहस से भर दिया। SLV-III परियोजना मेरी जिंदगी बन गई। हर घटक, हर सिस्टम एक चुनौती। हमने अनगिनत तकनीकी बाधाओं का सामना किया, लेकिन हमने हर एक से सीखा। SLV-III का निर्माण एक तीर्थ यात्रा की तरह था। इसमें समर्पण, ध्यान और विश्वास की आवश्यकता थी। खुद पर विश्वास, अपनी टीम पर विश्वास। हम एक परिवार थे, एक सपने से जुड़े हुए। एक भारत का सपना जो अंतरिक्ष तक पहुंच सकता था। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग परियोजना नहीं थी, यह राष्ट्रीय गर्व का मिशन था। Section 4, SLV-III, the agony of fire, the ecstasy of orbit. The first launch of SLV-III approached. It was August 10th, 1979. Years of hard work were on the line. The nation held its breath. We watched the countdown with hope. The rocket lifted off, a majestic sight.
But soon things went wrong. The second stage malfunctioned. The rocket tumbled into the sea. Our dream seemed to crash with it. That moment was one of deep pain. Failure can be a harsh teacher. I felt the weight of responsibility. The disappointment was immense, but Professor Satish Dhawan, then ISRO chairman, stood by me, by our team. He took the blame upon himself. He taught me a great lesson, a lesson in leadership and grace. He said, "We will try again." His words gave us new strength. We analyzed what went wrong. We worked tirelessly to fix the flaws. The team was more determined than ever. Failure was not the end. It was a stepping stone, a chance to learn, to improve. We rebuilt, we retested, we refined. The spirit of resilience filled our labs. We would not give up. Then came July 18th, 1980, the day of the second attempt. The tension was palpable, yet hopeful. SLV-III roared into the sky again. This time it flew perfectly. It placed the Rohini satellite into orbit. India had become a spacefaring nation. The control room erupted in joy. Tears flowed freely, tears of triumph. The agony of fire had turned into ecstasy. Our hard work had borne fruit. Section 5. Return to DRDO, forging India's shield of missiles. After the success of SLV-III, my journey took another turn. I was asked to return to DRDO to lead India's missile development program. This was a new, immense challenge. The nation needed a strong defense, a shield to protect its sovereignty. The Integrated Guided Missile Development Program, IGMDP, was born. It was a mission of great importance for India's security and self-reliance. We envisioned a family of missiles: Prithvi, for tactical surface-to-surface roles; Trishul, a quick-reaction surface-to-air missile; Akash, a medium-range air defense system; Nag, an anti-tank guided missile; and Agni, the long-range strategic missile. Each was a complex undertaking, requiring cutting-edge technology and the dedication of thousands, scientists, engineers, and technicians. The path was filled with obstacles. Technological hurdles were many. International sanctions and restrictions tried to slow our progress. But these challenges only strengthened our resolve. We believed in our capabilities. We worked with indigenous resources. The spirit of can-do prevailed. Failure was met with analysis, not despair. Each setback taught us valuable lessons. The development of Agni was particularly significant. Section 6. Pokhran's Echo, a nation's strength, a scientist's humility. In 1998, another crucial moment arrived. India conducted the Pokhran II nuclear tests. I was then the scientific advisor to the defense minister and secretary of the DRDO. This was a decision of great consequence, taken to ensure our nation's security in a complex global environment. The tests were conducted successfully, demonstrating India's capability and its commitment to minimum credible deterrence. The world reacted strongly. There were sanctions and criticisms, but India stood firm in its resolve. The success of these tests was a team effort, involving scientists from DRDO and DAE. It showcased our scientific maturity and our ability to handle complex projects. For me, it was another step in the journey of making India strong and technologically self-sufficient. Despite these monumental achievements, I always remembered my humble beginnings. The lessons from Rameswaram stayed with me. Simplicity was a way of life. Success did not change the core values, the values of hard work, integrity, and humility. I found joy in simple things, playing the veena, writing poetry, interacting with young minds. Section 7. From Lab to Rashtrapati Bhavan, the People's President. Life often presents unexpected turns. In 2002, a new chapter began. I was chosen to be the President of India. It was a responsibility I had never sought. From a scientist's lab to Rashtrapati Bhavan, the journey was overwhelming, yet humbling. I saw it as another opportunity to serve the people of India, especially the youth, the future of our nation. They held the key to India Vision 2020. As president, my focus remained clear: to ignite the minds of young Indians, to inspire them to dream big, and to work hard to achieve those dreams. I traveled across the country, meeting students, teachers, and citizens, sharing my experiences, listening to their hopes. I believed in the power of youth, their energy, their creativity, their passion. These could transform India into a developed nation. My vision was for a strong India, strong not just militarily but economically, strong in science and technology, strong in education and healthcare.